Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Miss Munawwar from Guards Public Higher Secondary School 1. Today I welcome you all in lecture number 6 of subject English Literature class 3. Today our new lesson is the wooden bowl. It is on page number 14 till page 17. Before starting our today's new topic, let's take a short preview of last lecture. Previous we have done a poem on sunning. In the poem Sunning, we talked about that an old dog who was sleeping in the sunny afternoon, and he was dreaming that he was chasing a rabbit. Now let's start our today's new lesson. The characters in this story is Kurt, an old man, Manfred and Thekla, and his son Wilhelm, who is 4-year-old boy. Now let's start our lesson. The wooden bowl. Once upon a time, in a small town in Germany, there lived a man called Kurt. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक स्मॉल टाउन में एक आदमी रहता था जिसका नाम था कर्ट. He lived with his son Manfred and his daughter-in-law Thekla. वो अपने बेटे और अपनी बहू के साथ एक छोटे से घर में रहते थे. They all lived together in a little old house. Manfred was a carpenter and spent all his time in a workshop near to his house. Manfred एक कारपेंटर था और वो मोस्टली अपना टाइम वर्कशॉप में ही गुजारता था जो उसके घर के करीब था. He learned carpentry from his father, who had been a famous carpenter in his days. उसने कारपेंट्री अपने फादर से सीखी. उनके फादर का नाम कर्ट था ना. उनके फादर ने इनको कारपेंट्री सिखाई. who had been a famous carpenter in his days. वो अपने वक्त में एक बहुत ही बड़ा फेमस कारपेंटर थे. Kurt had taught his son well, and the son earned a good living, and time to time he did some carving. Kurt ने बहुत ही अच्छी कारपेंट्री सीखी और अपनी लिविंग को भी बहुत अच्छा अर्न करता था. Now let's move on the next slide. The young couple Manfred and Thekla had a son called Wilhelm. Young couple Manfred और Thekla का एक बेटा था who was 4-year-old and his name was Wilhelm. The boy Wilhelm liked to sit in the workshop. He watched and helped his father by fetching and carrying things. वो अपने फादर को हर वक्त देखता रहता कि उसके फादर कैसे काम करते हैं. कोई चीज़ उनके लिए ले आता, कभी उनको हेल्प करता, उनको कोई चीज़ उठा के देता. He learned to clean the tools and to take care of them. टूल्स को साफ करने में उनकी हेल्प करता था. His grandfather taught him to carve wood into wonderful shapes. इसके ग्रैंडफादर ने इसको सिखाया था कि किसी भी लकड़ी की चीज़ को कार्विंग कहते हैं, किसी भी चीज़ को शेप देना, उसको इतने अच्छे तरीके से वो शेप देना कैसा होता है, उसको वंडरफुल शेप्स देता था. एंड दिस स्किल ही learned from his grandfather. The grandfather was very old now and getting older every day. Grandfather अब बहुत ही ओल्ड हो चुके थे और अब वो दिन ब दिन मज़ीद अपनी ज़ईफ़ी की तरफ जा रहे थे.
He was not very strong. अब वो पहले की तरह स्ट्रांग नहीं रहे थे. His hands trembled. उनके हाथ कभी लरस जाते. He was slow and clumsy. वो बहुत ही स्लो और क्लमजी. क्लमजी कहते हैं जिससे कोई चीज़ हैंडल ना हो सके. जैसे हमने अगर कोई चीज़ अपने हाथ में होल्ड की और वो हमारे हाथ में हैंडल नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज. समटाइम्स हिज हैंड शूक. समटाइम्स कभी उनके हाथ कांपते एंड समटाइम्स ही नॉडेड ऑफ. और कभी वो खुद भी बहुत कांपते थे. समटाइम्स ही ब्रोक अ ग्लास. कभी उनके हाथ से ग्लास गिर जाता. ही ड्रॉप्ड अ स्पून एंड समटाइम्स ही स्पिल्ड सूप ऑन हिज क्लोथ्स. और कभी कभी तो उनके हाथ से सूप उनके कपड़ों पे भी गिर जाता था. ही रोल्ड ऑफ हिज स्पून ऑन टू द फ्लोर. उनके हाथ से चीज़ें गिर जाती. कभी स्पून गिर रहा है, कभी उनके हाथ से बोल गिर रहा है. दिस एल्डरली ग्रैंडफादर्स शेकी हैंड्स फॉलिंग साइट मेड ईटिंग डिफ़िकल्ट. उनको खाने में अब बहुत ही परेशानी हो रही थी. One day during the evening meal, the old man dropped his plate on the floor. एक दिन खाने के वक्त ओल्ड मैन की प्लेट उनके हाथ से गिर गई. Crash! It smashed into 100 tiny pieces. और एक आवाज़ आई क्रैश. और वो प्लेट 100 tiny pieces में कन्वर्ट हो गई. And the food fell all over the place. हर जगह पूरे फ्लोर पर खाना ही खाना बिखर गया. Thekla and Manfred began to clean up the floor. But how angry they were! Thekla and Manfred ने फ्लोर तो साफ कर लिया, लेकिन वो कितने एंग्री थे ओल्ड मैन के ऊपर. The story will be continued in the next lecture. And now it's assignment time. Before starting the assignment, let me tell you about the outline of assignment. First we will do difficult words from 1 till 10. After that, words meaning we will do in the copy. Words meaning are 5. Then question answers. Then fill in the blanks. RTC. Make sentences. Activity we will do in the book on page 18, exercise B, question 1 and question 2. Students, let me clear that in this lecture we will cover difficult words, words meaning, question answers and fill in the blanks. And from RTC we will continue it in the next lecture. Now let's start our written work. Question number 1. Find out at least 10 difficult words from the whole lesson and underline it in your book. No need to copy down in your copy. आपको आपकी book The Wooden Bowl lesson से the whole lesson you have to underline any 10 difficult words and you no need to copy down in the copy. You have to remain there in the book and the written work will be start from words meaning. Now, words meaning. Number 1, chisel, a metal tool used to cut wood. Clumsy, lacking skill. Earned, received money for work. Fetch,
to go after and bring back. Nod off, to go to sleep. Students, number 1 जो वर्ड है chisel, वो एक मेटल टूल होता है जो वुड को काटने में मदद देता है. नंबर 2 इज क्लमजी. क्लमजी मैंने आपको बताया कि इसका मतलब है कोई एक हमारी नेचर में किसी एक स्किल का कम होना. जैसे कि ओल्ड मैन जो था कर्ट, उसके हाथ कांपते थे, वो बहुत ही बूढ़े ज़ईफ़ हो गए थे, तो ये स्किल इनके पास कम हो गई थी, उनके हाथ लरसते थे. तो क्लमजी मीन्स लैकिंग स्किल, उनके अंदर इस चीज़ की लैकिंग थी. अर्नड, रिसीव्ड मनी फॉर वर्क, किसी चीज़ के लिए अर्न मतलब कमाना और उसके लिए उसका मुआवजा लेना मनी की सूरत में. फैच, टू गो आफ्टर एंड ब्रिंग बैक, कोई चीज़ लाना. फैच मीन्स किसी चीज़ को लाना. नॉड ऑफ, टू गो टू स्लीप. नाउ question answers. Question number 1, where did the family live? Answer, the family lived in a small town in Germany. Question number 2, who was Thekla? Answer, Thekla was Manfred's wife, Wilhelm's mother, and Kurt's daughter-in-law. Question number 3, why was Wilhelm making a wooden bowl? Wilhelm was making a wooden bowl to give to his parents when they grow old. Now move to the next slide. Continue of question answers. Question number 4. How did Thekla and Manfred treat the old man? Thekla and Manfred got angry with the old man. They punished him by giving him meal in a wooden bowl. Question number 5. Why did Kurt's hands shake? Kurt's hands used to shake because he was not very strong and getting older every day. Now move to the next slide. Fill in the blanks. Number 1, Dash was a carpenter. Number 2, Manfred and Thekla had a son called Dash. Number 3, grandfather spilt Dash on his clothes. Number 4, Wilhelm was cutting a small block of Dash. Then number 5 is the Dash was making a wooden bowl for their parents. Students, let me clear that these dash are not written. You have to write it down by your own. If you understand the lesson properly, then you will easily find out the answer. I hope you understand the lesson and I hope you will done all the work in the copy very neatly. Till then, Allah Hafiz. Take care.